So our next topic is electric field. The details about electric field we'll study in class 12th, in class 10th. Nothing is going to be asked in the board exam or anywhere in the test. But just for the basic understanding, we are studying this topic. I've written formula and everything here, but this is not important for class 10th standard students. In 12th it is very important. So let's see. It is the region or the space around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particles or objects when they are kept in that. Like this is a source charge. A source charge Q is kept at O. So it has got its you can say electric environment. सोर्स चार्ज Q इज केप्ट एट O, तो इसका एक अपना इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पेस है, रीजन है इसके चारों तरफ जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है. अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो आइदर उनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा इसकी वजह से, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, कि उनका साइन इसके जैसा है या डिफरेंट है, अकॉर्डिंगली अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा. सो द रीजन और द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस हो या जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल रखे चार्ज पार्टिकल, तो उनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगे. नाउ दिस इज अ सोर्स चार्ज kept at O, so it has created its electric field. Now if there is a point P in the electric field of this charge and a test charge is kept there. Test charge means test charge का सिंबल लेते हैं हम Q नॉट. अगर टेस्ट मास लेना हो तो M नॉट लेंगे, Q0 और Q नॉट. So this is test charge. So if a test charge is kept at P in the electric field created by this source charge, so this test charge will experience a force, this force, and hence mathematically electric field will be defined as force experienced per unit test charge, or simply force divided by test charge. Here is the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे नाम हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहें, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहें, सब एक ही बात है. F इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q इज द टेस्ट चार्ज. तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी सोर्स चार्ज से बना है, उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ही इसमें कोई फोर्स लगेगा. अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से टेस्ट चार्ज बाहर होगा तो उसमें कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा. सो द स्पेस और द रीजन अप टू विच अगर हम इस टेस्ट चार्ज को रखें तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगे, उसी एरिया को, उसी रीजन को, उसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो किसी न किसी चार्ज से बनता है. जिससे बनता है वो सोर्स चार्ज, और जो हम टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो टेस्ट चार्ज. नाउ लेट्स डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ electrical components, that is conductors and insulators. In some substances the electrons can flow very easily, charges of the electrons they flow very easily, while in others they cannot flow at all. So the substances through which the electricity or electron or charges can flow very easily are termed as conductors. It is because of since they contain free electrons and those electrons are able to move, that is why they conduct electricity, and they are termed as conductors. Examples are all metals, almost all metals, silver, copper, aluminum, etc. All metals, alloys like nichrome, constantan, manganese, human body, carbon in the form of graphite. Carbon has 3 allotropes, so we are talking about graphite. Carbon in the form of graphite. These are the examples of conductors. They conduct electricity. Charges are able to move very easily through them. The other one is insulator. These are those substances which do not have free electrons in them. Their outermost electrons are bound very strongly to the nucleus. So the electrons are not free, they are not able to move, and hence they do not conduct electricity. Examples are glass, rubber, plastic, paper, dry air. There are so many examples. So in short, the substances conducting electricity are conductors. The substances which do not conduct electricity, do not allow charges or electrons to flow through them, are insulators.